हम जो भी खाना खाते हैं वह अंदर जाकर टूटता है और उसमें मौजूद ग्लूकोज यानी शुगर निकलना शुरू होता है। दूसरी तरफ पेनक्रियाज एक तरफ का हार्मोन जो है इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन के कारण पेन जो ग्लूकोज जो है वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है और एनर्जी का संचार होता है। यह बिना इंसुलिन के नहीं हो सकता है। वहीं जब पेनक्रियाज से उचित मात्रा में एक्टिव इंसुलिन न निकले तो इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और फिर इस स्थिति को जो है मधुमेह यानी डायबिटीज या शुगर कहा जाता है। आज के समय में मधुमेह होना कोई बड़ी बात नहीं है। मधुमेह या डायबिटीज एक ऐसी बीमारी या कंडीशन है जो किसी व्यक्ति को एक बार हो जाए तो जीवन भर बना रहता है। पहले यह बीमारी सिर्फ ज़्यादा उम्र के लोगों को ही होती थी, लेकिन अब युवा और बच्चे दोनों इसकी चपेट में आ रहे हैं और यह जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर के ब्लड में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यदि शरीर में पर्याप्त इंसुलिन मौजूद नहीं होता है, तो ब्लड जो सेल्स है, उसके पास ग्लूकोज नहीं पहुँच पाता है और यह ब्लड में ही इकट्ठा हो जाता है और ब्लड में जो मौजूद एक्स्ट्रा जो शुगर है, वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो इसके कारण जो है डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर सकता है और इसको रोकने के लिए पर्याप्त देखभाल की जानी चाहिए। तो आज डॉक्टर अरुण कुमार से हम लोग जानते हैं कि ये डायबिटीज़ जो है, अभी जो बढ़ते युवा और जो खराब लाइफ़स्टाइल के कारण जो हो रहा है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? Thank you, Dr. Chandan. Already we have discussed diabetes and we have told that it is a very common metabolic disorder for the patient who is of the age group. So I will try to say that should be taken care of at very early stages, and for the time being, I also make caution that it should be uh, more prevalent. It is very prevalent. Its incidence is very much increasing day by day uh, due to our lifestyle or lack of physical exercise or our sedentary habit or our other disorders, maybe drug related. So, first of all, I will advise you how what is the diabetes. हाउ कब हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है या हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार है। तो इसमें कुछ लक्षण है जो काफ़ी कार्डिनल है, एंड दैट इज द पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, थर्स्ट, feeling hunger outbursts. These are the main symptoms when patient can be diagnosed as a diabetes mellitus, and it is basically of the two types, type 1 and type 2. Type 1 is the insulin dependent and type 2 is the non-insulin dependent. In the first one, former one, the insulin injection is given to control the blood glucose level, and in the type 2, where basically the our glucose resistance means pancreas is secreting the glucose, but it is not of the mark, secreting the, sorry, insulin, but it is not of the mark. So in the type 2 you are generally giving the metformin or GLT or thioglucosidone like the pioglitazone and other exercise, and that lack of exercise is the main factor for the type 2. So diet modification, these are the way through which we can control the blood sugar level, because here patient is non-insulin dependent, NIDDM, so here insulin secretion has to be increased. Insulin is there in the body, but the medication like sulfonylurea, it increases the level of the glucose normal. When it tries to control the, it works on the pancreas, the rest amount the pancreatic cell, what it is, it increases the level of the insulin by acting on the pancreatic cells. So, Dr. Chandan, what you try to say about this? Like,
Thank you, doctor, for your very nice information. And I would like to ask with you a question. What should my blood sugar be when I wake up, means fasting, and before meals, and what about after? Actually, already I have given the preliminary information that blood sugar level in the range of 100 milligram per dl. That should be the fasting, and below 120 milligram per dl after 2 hours of the food intake. That should be the PP, that is postprandial, you know. And a level, it can vary according to ethnicity, according to the region or the activity of the person, but the overall range is that what I have mentioned it. Now, uh, type 1 and type 2, that is a broad classification, and insulin resistance is a common term now we are using, where it is essential for the type 2. इसमें होता क्या है कि इंसुलिन का सिक्रीशन तो होता है, बट जो सेल पर एक्शन होने चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए पेशेंट को इंसुलिन देकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेशेंट को तो इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, कभी कम मात्रा में होता है, कभी नॉर्मल भी होता है। तो उस तरह की स्टेज में जनरली देखा गया है कि जो व्यक्ति ओबेस हैं या अबव 35 ईयर्स हैं, उस केस में इनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। रेजिस्टेंसी डेवलप होने की ज़्यादा संभावना होती है। जो ओबेज हैं, जिनका लाइफ स्टाइल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, अगर फैमिली हिस्ट्री है या प्री डायबिटीज़ है, या उनको हाई ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, इस तरह के केस में देखा गया जनरली कि पेशेंट आर मोर प्रोन फॉर द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंसी की संभावना ज़्यादा होती है, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है। सो आई वुड लाइक टू से दैट स्क्रीनिंग बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कोई लिवर डिजीज़ तो नहीं है। स्टेटोटिक लिवर डिजीज़ के केस में भी ये सब देखा गया है कि पेशेंट को हो सकता है। सो आई वांट टू से दैट इस केस में ज़्यादातर हम लोग टाइप 2 के लिए ही मेडिसिन, जितना भी आप जो मेटफॉर्मिन, टिनेगिलिप्टिन, सीटागिलिप्टिन, या जो आई विल क्लासिफाई लेटर ऑन, ये सब जितनी भी दवा है, आपने ग्लूकोनॉर्म 2 सुना है, तो ये सब जनरली दिया जाता है टाइप 2 के लिए। टाइप 1 के लिए इंसुलिन इंजेक्शन इज मोस्ट फेवरेबल और मोस्ट डिमांडिंग टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट मिक्सचर, जो क्लासिफिकेशन ये जो मैंने बताया ब्रॉडली एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, बट दैट इज most sort of the type 1 and type 2 is the like the juvenile onset and MODY. Now coming to the treatment part of the diabetes mellitus, what I will tell broadly that include the diet, exercise, weight loss, education for the management or food, and insulin resistance, and in the type 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस इज मोस्ट कॉमन। तो कैसे रेजिस्टेंसी कम करना है इसके बारे में एजुकेट करना है जो भी हमारे व्यूअर हैं या व्यूअर के जो भी अटेंडेंट हैं, उनको बताना है कि क्या ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आपने बात की टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 को मैं इसलिए बार बार कहना चाह रहा हूँ कि ये ज़्यादा ही कॉमन है, और मोस्ट जितने भी मेडिकेशन है, मैं ऑलरेडी बताया कि जैसे मेटफॉर्मिन हुआ या सल्फोनाइलूरिया हुआ, या सल्फोनाइलूरिया में जैसे कि ग्लिपिजाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, उसके बाद ग्लिनाइड, जिसमें कि ये सल्फोनाइलूरिया टाइप का एक्शन होता है, लेकिन इसका काम होता है कि जो ऑलरेडी सिक्रीशन है इंसुलिन का, उसके सिक्रीशन को थोड़ा सा और बढ़ा देना, ये सल्फोनाइलूरिया का काम होता है। जैसे इनएडिक्वेट इंसुलिन है, तो इस दवा को ओढ़ने से एडिक्वेट हो जाता है, एडिक्वेट मात्रा में सिक्रीशन होने लगता है। तो मेरा ग्लूकोज लेवल अगर 200 है या 250 है, तो सल्फोनाइलूरिया देने से इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ेगा और फिर से मेरा शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। ये हुआ सल्फोनाइलूरिया का एक्शन। उसके बाद है थाइजोलिडिंडियोन, जिसमें कि पैग्लिटाजोन बहुत कॉमन है। बाद में हालांकि देखा गया कि इसमें ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह साइड इफेक्ट है, इसलिए इसको मार्केट में काफ़ी
ये उस मात्रा उस तरीके से नहीं हो रहा है जितना कि पहले हुआ करता था। उसके बाद डीपीपी-4 इन्हिबिटर। डीपीपी-4 इन्हिबिटर में बहुत कॉमन है टेनागिलिप्टिन, सिटागिलिप्टिन, लिनागिलिप्टिन, जो कि आजकल कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है, इसका कोई हार्ट पर या किडनी पर इफ़ेक्ट देखा गया कि बहुत ही कम है। उसके बाद जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये ये इसमें जो मेन मेडिकेशन है लिराग्लुटाइड, सेमाग्लुटाइड, और इसमें देखा गया है कि अ, जो पॉसिबल जो साइड इफ़ेक्ट्स है इसमें, उसमें पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया का हिस्ट्री पेशेंट दे सकता है, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है आजकल के पेशेंट में। और देखा गया कि हार्ट अटैक के पेशेंट में या स्ट्रोक का जो पेशेंट है, जो वल्नरेबल ग्रुप है, इसमें थोड़ा-सा संभावना है, बट अगर कैलकुलेटेड डोज़ में दी जाए। और दूसरी बात कि ये इंजेक्टेड मेडिकेशन है। टाइप 2 ट्रीटमेंट के लिए जो इंजेक्टेड मेडिकेशन है वो जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो कि इंजेक्ट करके दिया जाएगा। बाकी जो ओरल मेडिकेशन है। उसके बाद जीएलपी-T2 इन्हिबिटर, जो कि किडनी पर एक्शन करता है, और ग्लूकोज जो कि लगातार ब्लड में जो हाई हो रहा है ब्लड स्ट्रीम में, उसको उसमें रिटर्न होने से अ, फिर से दोबारा रिटर्न नहीं होने देता है। जो ग्लूकोज एक बार बाहर निकल गया, फिर से ब्लड स्ट्रीम में जाने से फ़िल्टर का काम करता है। तो ये इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, और ये काफ़ी देखा गया है कि पैसे उपयोगी साबित होते जा रहा है। और एक एक जो चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि आजकल प्रेगनेंसी, कई बार देखा है कि प्रेगनेंसी में ब्लड का जो लेवल है वो ऊपर-नीचे होता है। उस केस में भी उसकी उसे ये देखना होगा कि कुछ मेडिकेशन को, जो प्रेगनेंसी जो है उसमें या लैक्टेशन का स्टेज है, उस स्टेज में कुछ मेडिकेशन को बंद करना है, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ये देखा गया कि आई का रेटिनोपैथी की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का केस बढ़ जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरग्लाइसेमिया। सो इस तरह की चीज़ों को दिमाग में रखना है, और मैं एडवाइस दूँगा प्रेग्नेंट महिलाओं से, जो वल्नरेबल ग्रुप है, दैट शुड कंसल्ट द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एंड these are the sign of trouble. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बहुत स्थिति खराब हुई तो पैंक्रियास ट्रांसप्लांटेशन भी है, या वेट लॉस सर्जरी भी कराई जाती है, क्योंकि देखा गया है कि ओबेज पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे मेडिकेशन भी हैं जो कि वेट लॉस भी कराते हैं, अगर अपार्ट फ्रॉम द हाइपरग्लाइसेमिया कंट्रोल। सो इसमें मैं आपसे डॉक्टर चंदन जानना चाहूँगा कि रैपिड रेटिनोपैथी की जो मैंने बात की, व्हाट यू लाइक टू से? Thank you, Dr. Arun. As you told that complication of diabetes that affect the eyes, and as we all are know that diabetic retinopathy is caused by the damage to the blood vessels in the tissue at the back of the eye, means retina, and poorly controlled blood sugar is a risk factor, and it is a leading cause of blindness in India. Next question from my side: what is the main complication uh, from diabetes? ओके डॉक्टर चंदन, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन, आई मीन कि हाइपरग्लाइसीमिया का कॉम्प्लिकेशन इन द लेटर स्टेजेज, इफ अनकॉम्प्लिकेटेड अनट्रीटेड, इट कैन बी ऑफ द ब्रेन causing the strokes, it can be the diabetic retinopathy affecting the eye, causing the blindness, heart disease like the heart attacks or heart failure is the most common complication in case of the if glucose persistently becomes higher in the our blood level. So these are the complication. Other like the diabetic retinopathy, already told diabetic neuropathy or diabetic nephropathy, where the glomerulus and the renal tubules become affected, and ischemic changes occurs. It all causes the
inflammation of the nerves or the nephron or the retina, you know. So we should take care of the medication, either patient is type 1 or type 2, and I already discussed that these are the already medication I have already told for the and I want to add for the type 2 also the sodium glucose transporter tool is very is new invention, we can say, for the patient who are which affect the filtering systems already, and the common medication is are the canagliflozin and the empagliflozin and dapagliflozin. These are the most important drug which remove the glucose from the urine. And I will like to say that for this patient, there are some complications like the vaginal yeast complication or urinary tract infection or low blood pressure and high cholesterol. These are the side effect, possible side effects where the SGLT2 should be stopped or should taken off. Very cautious use should be there in such type of the patient. If the patient is of the UTI or the vaginal tract infections and other things. Now we have pointed out like the complications. So blurring of vision in case of the diabetes mellitus or in the swelling of the all over body, generalized inflammation in case of the diabetic nephropathy. The stroke is also very common in case the patient has persistently higher levels of the glucose. So I will try now for the prevention or the for the screening. We have to be very cautious. Like for the screening of the patient, how I can say the patient is going to be pre-diabetic or diabetic. So glycosylated hemoglobin, that is the best indicator, and if it is below 5, then I can say the patient is okay. If it is above, persistently above the 5.7, that is the glycosylated hemoglobin, then we have to be very cautious. And then we go for the PP or the preprandial or postprandial glucose level. Screening is very must. And if the patient is diagnosed, then what I have discussed, the physical exercise. The physical exercise include the aerobic exercise or resistance exercise and limit inactivity. Aerobic like the walking or traveling, you can say like swimming. These are the aerobic exercise. Where the resistance exercise, when we lift a, something, some weight, the weight lifting is a resistant exercise, type of resistance exercise, where we feel the resistance. Yoga, when limit in activity, when the person is very much working on the computer or then such type of the patient should tell that should be advised that we should go for the walking at least every 30 minutes, so that such sort of the uh, intervention really is very helpful. Dr. Chandan, I will also tell that we are most of time talking about the hyperglycemia, but hypoglycemia is also very dangerous and that should be taken care of. And last but not least, I will add diabetic ketoacidosis. That is the most common complication where the body uses the fat for the fuel or for the energy, because persistent glucose is not going to help. So body tries to take energy from the consumption of the fat, exhaustion of the fat, and that results in the formation of the ketone bodies in the acid level is increased. That is more dangerous, the more harmful for the such type of the patient. Now coming to the low blood glucose, that is the hypoglycemia, you know. This is also very dangerous because it is uncontrollable most of the time. Higher glucose can be controlled, but the lower glucose is very dangerous. I will make to caution. In the such type of patient, we will generally find the sweating or sickness or the weakness or dizziness, hunger, irritability, headache, blurring vision, palpitation, slurred vision, or sometimes the patient becomes very drowsy. So these are the common symptoms. In the clinical scenario, you generally find the sweating and the palpitation, where the patient is very numb and attendant comes that.
this patient is feeling such type of the thing. So we should have that and it can occur at same time, means a frequent interval. So for the there is very short type of the buffer system, that higher glucose and lower glucose, that buffer system should be maintained. And the age is very common factor here. Most of time the patient above the 40 or 50, they are generally of the hypoglycemic. And I will tell you that there are some other drug also which are coming in the market, that the IGF, that the insulin growth factor. These are also the drug which are the future prospect. So, what Dr. Chandan, any idea about how to prevent or yoga or like so naturopathy? Thank you, Dr. Arun. As we know that exercise is best for diabetes, and exercising, if you have diabetes complication, for example, you should avoid high intensity activity and heavy lifting. But there are other gentle, low impact exercise you can try, such as swimming, cycling, or walking. These are the best exercise for control diabetes. Apart from this, you can try yoga and cycling, aerobic dance, weightlifting. It will help control diabetes. Next question from my side: what are the early warning sign of a diabetic coma? This already Dr. Chandan have told diabetic coma. Actually, it is type of non-ketotic condition. The patient glucose level is not so much high, but the patient may go in the coma or tend to, when the blood glucose level is generally in the range of 200 milligram per day. It is different from the diabetic coma or the HNSSS, which is where the blood glucose level is above the 600 milligram per day, where the previous condition is like the complaint of the dry mouth or extreme thirst or dodginess confusion or dodginess seizure attack can be the common in the HNS. So I will tell patients to be very cautious. Already I have told you glucose may go up, go down. Sometimes the buffer system is very limited, very short. In such patient, you can find all type of the symptoms. Now I will have just discussed about the pregnancy and the insulin and the diabetic retinopathy already. In some cases, in the now the clinician encourage the patient to take the insulin for the pregnancy related hyperglycemia, because other medication which are oral may affect the child or not so helpful. So it has been seen that insulin, use of insulin during pregnancy is very much helpful for the patient, and they have stopped other medication also apart from the anti-diabetic medication. They should stop the antihypertensive, because hypertension is also very common and it can go along with the diabetes. So we have to suggest the patient that stop all those medications during pregnancy. I will repeatedly saying, because there can be a sign of trouble for the patient. So we have already discussed the complication treatment part about the prevention. Now, Dr. Chandan, what you tell about the prevalence? डायबिटीज क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है लगातार ये क्या कारण हो सकता है इसके लिए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कहा कि क्यों नहीं अभी डायबिटीज खत्म हो रहा है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज को नियंत्रण करना खुद अपने हाथों में है। और जैसा कि यह एक जो है जो बीमारी है, जिसमें कि ब्लड शुगर का जो है वो लगातार इंक्रीज हो जाना है, और इसमें जो है आपका खुद का डाइट जो है वो मिसमैनेजिंग, वो कह सकते हैं, या फिर स्ट्रेसफुल लाइफ, या जो आपको हार्मोनल चेंजेज है उसके कारण ऐसा हो जा रहा है।
और बहुत सारा इसका फैक्टर है जिसके कारण से ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग ये भी ये कह सकते हैं कि जैसे कि कोई जो मरीज आता है तो फिर उसका जो हिस्ट्री रहता है स्मोकिंग का है, अल्कोहलिक है, या फिर जो ओबेसिटी है उसके कारण, और वो अपना जो डाइट का प्लान है वो सही तरीके से नहीं करने के वजह उसका जो डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड वे से चलता रहता है। तो ऐसी इस तरह का जो जो मैनेजमेंट है अपने डाइट और लाइफ़स्टाइल के प्रति, तो ये सब जो है डायबिटीज़ को लगातार जो है वो वृद्धि करवाता करने में ये इसका भी एक बड़ा योगदान है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जैसे कि ब्लड शुगर, तो इसमें खाने के साथ-साथ जो है जो मेडिकेशन है और उसके साथ आपका जो एक्सरसाइज़ या फिर आपका जो स्ट्रेसफुल लाइफ़ उसको आपको कम करना है। तो ये सभी को अब यदि फ़ॉलो करते हैं तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा, और जितने भी आपका जो ऑर्गन है, जो डायबिटीज़ के कारण खराब हो सकते हैं, जैसे कि बताया कि डायबिटिक के कारण जो है किडनी पे जो असर पड़ता है, लीवर पे, या शरीर का जो भी मेजर पार्ट है उस पे जो इफ़ेक्ट करता है, तो वो उससे आप बचाव कर सकते हैं। थैंक यू। कर दो।